Let me share my screen. Okay. In last session, we saw transfer postings, stock to stock, material to material, and consignment to warehouse. स्टॉक टाइप टू स्टॉक टाइप मध्ये आपण पाहिलं अनरेस्ट्रिक्टेड टू ब्लॉक, ब्लॉक टू अनरेस्ट्रिक्टेड, क्वालिटी टू ब्लॉक, ब्लॉक टू क्वालिटी, क्वालिटी टू unrestricted, unrestricted to quality. These movements can be posted within the same storage location. Only material document is generated, no accounting document is generated because quantity at plant level remains the same. Identification of the material changes and physical movement may be possible. Material to material transfer posting 309 movement type, material and accounting document both are generated. Base unit of measure for both the materials must be same. And then we discuss consignment to warehouse transfer posting where accounting and material document both are generated. Today we will see physical stock transfer. So in physical stock transfer, physical material movement is possible. You move the material physically, and the physical stock transfer can be done in one step or two step procedures. We will see in detail what is one step procedure, what is two step procedure. Now there are three types of stock transfers. First is storage location to storage location stock transfer. So this particular stock transfer is within one company codes different storage locations. एक ही कंपनी कोड के अंदर अगर अलग अलग स्टोरेज लोकेशंस है, अलग अलग प्लांट्स है, सॉरी my mistake. Okay, so storage location to storage location stock transfer is movement of stock from one storage location to other storage location within a plant. एक ही प्लांट के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस है तो एक स्टोरेज लोकेशन से स्टॉक क्वांटिटी को उठा के अगर हमने दूसरे स्टोरेज लोकेशन में रखा तो उसको हम बोलेंगे स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन स्टॉक ट्रांसफर. दिस इज विद अ प्लांट. एक ही प्लांट के अंदर एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन के बीच में अगर हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, so that is storage location to storage location stock transfer. Second is plant to plant stock transfer. So here we move material from one plant to other plant within a single company code. एक ही कंपनी के अंदर मेरे अगर दो प्लांट है तो एक प्लांट से अगर दूसरे प्लांट में मैं मटेरियल का मूवमेंट कर रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज प्लांट टू प्लांट स्टॉक ट्रांसफर. थर्ड इज कंपनी कोड टू कंपनी कोड स्टॉक ट्रांसफर. तो अगर मेरे पास दो कंपनी कोड्स है and if I am transferring stock from one plant of one company code to another plant of another company code, then that is called as company code to company code stock transfer. ठीक है, तो plant to plant, storage location to storage location, and company code to company code. These are three different types of stock transfer. First, we will see storage location to storage location stock transfer. So this is विद इन अ प्लांट. एक प्लांट के अंदर एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन के बीच में अगर गुड्स मूवमेंट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन स्टॉक ट्रांसफर. नाउ फॉर दिस द मूवमेंट टाइप दैट इज यूज्ड इज 311 for one step. If we are doing the one step
stock transfer, then we use 311 movement type, one step. And if we are doing it in two step, then there are two different movement types, 313 and 315. 315. So 313 is remove from storage. 315 is place in storage. Okay. Now, one step. In one step, what happens? So I have a plant, suppose 1000, and in plant 1000, I have two storage locations, SL01 and SL02. Naming of storage location. This is one storage location. This is another storage location. And suppose I have 500 quantities in storage location 1 and 0 quantities in storage location 2. I want to do a stock transfer from storage location 1 to storage location 2 for 200 quantities. So when I use one step, that is 311 movement type, and I do a stock transfer of 200 quantities, immediately the quantities from source storage locations will be reduced and increased in destination storage location. For example, if we move 200 quantities, once we post 311, here you will see 300 quantities and here you will see 200 quantities. So as soon as you post the goods movement, source storage location stock is reduced and destination storage location stock is increased by the same quantities. Okay, this type of stock transfer, one step, we use when the physical location of storage locations is at the same place. For example, if you see this scenario, plant 1000, storage location 2000, storage location 1000. So this plant, within this plant, these two storage locations are there. And physically, these storage locations are at same address of the plant. So the distance to storage locations is not so far. They are within the same premises. So from one storage location, when you reduce the quantity, it will not take much time to replenish these quantities to this storage location. So you can do one step stock transfer, because when you do the transfer and see in the system, you will see the stock available in the destination storage location. So there should not be a, so ऐसा अज्यूम करो कि आपने अभी 311 पोस्ट किया, डेस्टिनेशन में जाके आपने डेस्टिनेशन स्टोरेज लोकेशन में सिस्टम में स्टॉक चेक किया तो आपको सिस्टम में स्टॉक दिखेगा। और फिजिकली अगर आप स्टोरेज लोकेशन में गए तो भी वहां पे आपको स्टॉक रिप्लेनिश करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा अगर सिनारियो है तो वन स्टेप यूज किया जाता है। नाउ सी दिस सेकंड स्टेप, सेकंड सिनारियो, हियर we are doing a stock transfer from this storage location to this storage location, and this storage location is outside of our plant premises. मान लो कि मेरा प्लांट है किसी फिजिकली किसी एक जगह पे और मेरा वेयर हाउस है उस जगह से लेके 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के दूर। ठीक है, सो when you transfer stock physically from your plant to this warehouse, it is going to take some time, maybe मान लो 2 घंटा लगने वाला है, 3 घंटा लगने वाला है। तो 3 आपका जो स्टॉक है वो इन ट्रांजिट में रहेगा। ठीक है, वो आपको डेस्टिनेशन में कब दिखेगा? जब वो मटेरियल वहां पे फिजिकली जाएगा तब जाएगा। इस सिनारियो में हम टू स्टेप यूज करते हैं। Have visibility on the stock transit. Here it will not take much of time to replenish the stock quantity, so we can use one step. So in one step, immediately the quantities are reduced from source storage location and placed into
destination storage location. In 311, material document is generated and accounting document is not generated because there is no value change as the quantity remains same at plant level. प्लांट पे अभी कितना क्वांटिटी था बिफोर द मूवमेंट? 500 क्वांटिटी था. इस स्टोरेज लोकेशन का 500, इस स्टोरेज लोकेशन का 0. आफ्टर द मूवमेंट इसका 300, इसका 200, 500. 500 क्वांटिटी ही प्लांट पे है. सो देयर इज नो चेंज इन plant level. Takes at plant level. So no change in value, no accounting document is generated, only material document is generated. This is called as one step storage location to storage location stock. Now what happens in two step? So in first step, we remove the stock from source storage location. So same example again. We will see in two step now how it happens. So in two step, the first movement is 313, remove from storage. So when you post 313, 200 quantities will be reduced from the SL01, that is your source storage location. So the quantity after 313 in SL01 will be 300. जैसे ही हमने 313 पोस्ट किया तो SL01 का स्टॉक 200 क्वांटिटी से रिड्यूस होगा, बट SL02 का स्टॉक विल बी स्टिल 0. वो इमीडिएटली अपडेट नहीं होगा. When these 200 quantities that are removed from source storage location are received at destination storage location, ये जब destination पे आएगा तब वहां पे हम 315 को पोस्ट करेंगे. Till then the stock will be in transit. तो जो ये 200 क्वांटिटीज है वो हमको कहाँ पे दिखेगा? स्टॉक इन ट्रांजिट. 200 quantities you can see. Once the 200 quantities physically received at the destination storage location, then we post this movement type 315. That is, we will do a place in storage. So with 315, the stock in transit will become 0 and the destination stock will be updated with 200 quantities. So this is what happens at 315 movement type. At 313, only material document is generated. At 315, only material document is generated. This is storage location to storage location stock transfer. In location to storage location stock transfer, only material document is generated, even if it is 311, 313 or 315. Because plant level पे जो quantity है दोनों इसमें सेम ही रहता है तो वैल्यू का चेंज नहीं आता है. So this is what is storage location stock transfer within a plant. Any doubt, any question? No, sir. Okay. Now we will see this in system and then we will see plant to plant stock transfer. Now this material in plant AGP2 we have 5500 quantities in unrestricted use stock in storage location SL01. So storage location SL01 में 5500 क्वांटिटी है तो प्लांट लेवल पे अनरिस्ट्रिक्टेड में मुझे 5500 क्वांटिटी सिस्टम दिखा रहा है बिकॉज प्लांट लेवल स्टॉक इज सम ऑफ ऑल द स्टोरेज लोकेशन स्टॉक.
तो यहाँ पे एक ही स्टोरेज लोकेशन है, उसमें 5500 क्वांटिटी है, तो एट प्लांट लेवल मुझे 5500 अनरेस्ट्रिक्टेड में दिख रहा है. नाउ आई विल ट्रांसफर 500 quantities from SL01 to SL02 storage location. Now let me do the stock transfer. Go to Migo. Here we will select transfer posting only. Movement type we need to select 311. This is one step stock transfer. Transfer within the plant. Okay, enter the material number here 311. Material number is entered. Enter the plant AGP2. Enter storage location from where. This is from storage location and this is destination. So from SL01 we are moving the stock to which storage location you want to move. SL02. How much quantity you want to move? 500 quantities you want to move. Check and you can post. So we are moving 500 quantities from here unrestricted stock to SL02 storage location. Okay, check it and post it. Material document is posted. Display the material document. Document info, accounting document. No accounting document is generated because there is no change of value. Come here, refresh the stock quantities, and you can see 5000 quantities are available in SL01 now, and 500 quantities are moved to SL02. And immediately, source is reduced with 500 quantities and destination is increased with 500 quantities. So this is one step stock transfer within storage locations of same plant. Okay, so important is movement type 311. There is no accounting document, only material document is generated, and immediately stock from source is reduced and the stock is increased in the destination storage location. Now we will see two-step stock transfer. Again, I'll move 1000 quantities from SL01 and place it into SL02, or we can place it in SL03. Now for two-step, what we need to do, go to Migo, select here, remove from storage. Okay, remove from storage, not transfer posting. Other movement type will be 313. So there. Enter the material, enter the source plant, enter the source storage location. तो AGP2 SL01 से मैं 1000 क्वांटिटीज को ट्रांसफर कर रहा हूँ डेस्टिनेशन में AGP2 and what is the storage location. Either you can enter SL02 or SL03. I'll enter here SL03. Check it. ठीक है. So we are doing a 313 remove from storage. Post it. Posted. Material document is generated. Display. Check. No accounting is generated because no value change. Refresh the stock. यहाँ पे 4000 हो गया. SL01 में 1000 क्वांटिटीज यहाँ से रिड्यूस हो गया, बट SL03 में अभी तक वो गया नहीं है. So we have just removed the quantities from source storage location and it is not yet arrived at destination storage location. Now if you see here, transfer storage location. So you can see here
against SL03, 1000 quantities you can see in transit, or that is in transfer. So when you post any stock transfer movement type, the quantities belongs to destination storage location. So here the 1000 quantities you can see in front of SL03, because ultimately these are issued for SL03 and those will be received into SL03 storage location. Okay, 1000 quantities. So when you do the goods receipt, when you place the stock in destination storage location, then this transfer will become zero and these 1000 quantities will appear in unrestricted use stock. Now I will do place in storage. So here you can see place in storage. Select this, and here we need to give the reference of material document with which we posted 315 movement. तो अभी जो मूवमेंट पोस्ट करने के बाद जो मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ था उसका रेफरेंस हमको यहाँ पे देना पड़ता है. And then the system will copy everything from that material document. You can see here movement type 315 is selected automatically by the system because 315 का हमने 313 का हमने रेफरेंस दिया था, तो 313 मूवमेंट टाइप में इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है. ठीक है, सो 313 का जैसे ही हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे 315 मूवमेंट टाइप लेता है. 314 इज रिवर्सल ऑफ 313. ठीक है, 315 आया, आपने चेक किया एंड यू कैन पोस्ट इट. अगेन मटेरियल डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड, displayed, no accounting document is generated, and if you check the stock, now these 1000 quantities will disappear from transfer and it will appear in destination storage location. 1000 is available in destination storage location. So this is how you do a two-step stock transfer within a plant. So this is your storage location to storage location stock transfer. वन स्टेप है तो मूवमेंट टाइप 311, टू स्टेप है तो 311, 313 एंड 315. ठीक है, in both the cases only material document is generated, no accounting document is generated. Now we will see plant to plant stock transfer. Plant to plant. Now this is between two plants of same company code. तो अगर मेरे पास एक कंपनी कोड है, उसमें दो या तीन प्लांट है, तो एक प्लांट से अगर दूसरे प्लांट में मैं स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज प्लांट टू प्लांट स्टॉक ट्रांसफर. नाउ अगेन वन स्टेप एंड टू स्टेप कैन बी डन इन प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर. वन स्टेप का मूवमेंट टाइप है 301, टू स्टेप का मूवमेंट टाइप है 303 एंड 305. ओके, 301 is one step and two step, 303 and 305. एक मिनट.
Okay, so one step is 301, two step is 303 and 305. Now since this is plant to plant stock transfer, there will be change in quantity at plant level. प्लांट लेवल पे क्वांटिटी का चेंज होगा एंड आवर वैल्यूएशन टेक्स प्लेस एट प्लांट लेवल. सो प्लांट लेवल पे जितना क्वांटिटी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मूव होगा उतना उस क्वांटिटी का वैल्यू भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मूव होगा. सो व्हेन यू डू अ स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू another plant, material document and accounting document both are generated. Okay. In this case, both material document and accounting document will be generated because valuation takes place at plant level. और एक प्लांट से अगर क्वांटिटी माइनस हो रहा है तो उसका जो एसोसिएटेड वैल्यू है वो भी उस प्लांट से माइनस होके सामने वाली प्लांट के इसमें उसका वैल्यूएशन पोस्ट होता है. सो in plant to plant we will have material and accounting document both are generated. Now we will see how to post it. Now in one step में क्या होगा, immediately एक प्लांट से क्वांटिटी माइनस होगा, दूसरे प्लांट में क्वांटिटी प्लस होगा. टू स्टेप में फर्स्ट वी विल डू अ रिमूव फ्रॉम स्टोरेज. ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, सोर्स प्लांट से क्वांटिटी माइनस होगा बट डेस्टिनेशन में इमीडिएटली नहीं दिखेगा. व्हेन वी डू द प्लेस इन स्टोरेज इन डेस्टिनेशन द क्वांटिटीज विल बी अपडेटेड इन destination. Now the concept remains same. Only thing is here accounting will be generated in both the cases. तो यहाँ पे 301 पे होगा और यहाँ पे 303 पे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है because you are hitting the valuation once you do a removal from source plant. तो जैसे आपने सोर्स से मटेरियल को रिमूव किया वहां पे आपको वैल्यूएशन अपडेट करना पड़ता है. तो material document and accounting document both are generated at 303. At 305 when you place the stock in destination only material document is generated because आपने वैल्यूएशन ऑलरेडी 303 पे पोस्ट किया हुआ है और वैल्यूएशन सिर्फ एक बार ही पोस्ट होता है. तो 305 पे सिर्फ मटेरियल डॉक्यूमेंट होगा, 303 पे मटेरियल और अकाउंटिंग दोनों जनरेट होंगे, 301 पे भी मटेरियल एंड अकाउंटिंग बोथ आर जनरेटेड. नाउ this same material I will extend to plant AGP1. Let me see if it is available in AGP1. Extend it to AGP1. If not, it is not extended. Now, so one more point to remember. If we are doing a stock transfer from one plant to other plant, the material must be extended in both the plants. If it is not available in both the plants, you cannot do a plant to plant stock transfer. So MM01, I'm extending the material to plant AGP1. I'll generate these three details. AGP1. Okay. Valuation class. Now, I'll use 3000. So I have extended this to material to plant AGP1 as well. Now we will do the transfer of stock. Now, transfer posting, movement type will be 301 for one step. Now this material which is available in SL01 4000, SL02 500 quantities and SL03 1000 quantities. So at plant level we have 5500 quantities. Now I'm going to do a plant to plant stock transfer. 1000 quantities from SL01
of AGP2 to AGP1 SL01. So I'll enter the material here, plant. So this is your source details. Source plant, source storage location SL01, 1000 quantities I want to move from this plant to AGP1 plant. In AGP1, we don't have any quantities as of now. So if I go back, remove the plant from here and execute it. In AGP2 only I have quantities. In AGP1 there are no quantities since AGP1 is not displayed here. Now destination plant AGP1. Destination storage location. I'll select here 1000. Okay. So plant AGP2 storage location SL01 से 1000 quantities निकाल के AGP1 के 1000 स्टोरेज लोकेशन में हम पोस्ट करने वाले हैं. चेक एंड यू कैन पोस्ट इट. Posted. Display the material document. Go to document info, accounting document. You will see accounting document is generated because plant level पे value का change हो रहा है. Now see क्या हो रहा है source plant से. So this entry is for your source plant and this is for your destination plant. तो जितना वैल्यू मेरा सोर्स प्लांट से माइनस हो रहा है a credit entry, the same value is posted into destination plant. तो destination plant में BSX is for stock posting, अकाउंट 3 लाख ये मटेरियल मास्टर के वैल्यूएशन क्लास से डिटरमाइन हो रहा है. तो प्लांट AGP2 का जो स्टॉक अकाउंट है उसमें से इतना वैल्यू माइनस हुआ और वो AGP1 प्लांट में उतना वैल्यू पोस्ट हुआ. अभी ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है? क्वांटिटी इनटू द प्राइस ऑफ मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड. सो इफ आई डिस्प्ले द मटेरियल मास्टर सोर्स प्लांट के इससे उसका वैल्यूएशन होता है, डेस्टिनेशन से नहीं. सोर्स प्लांट इज AGP2. तो AGP2 में 195.08 उसका प्राइस है. 195.08 into 1000. So you can see here 195,080.22. तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. सो valuation takes place with sending plant's price. That is important point. Valuation of stock takes place with sending plant's material master price. सेंडिंग प्लांट या इशुइंग प्लांट जो है उसके मटेरियल मास्टर का जो भी प्राइस है, मूविंग हो या स्टैंडर्ड हो, उस प्राइस से उसका वैल्यूएशन होगा. मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, उतना वैल्यू सोर्स प्लांट से माइनस होगा और डेस्टिनेशन प्लांट में उतना वैल्यू पोस्ट होगा. नाउ इफ यू चेक द स्टॉक क्वांटिटीज हियर, रिफ्रेश इट and you can see AGP1 storage location 1000 is updated with 1000 quantities, and at plant level AGP1 you can see 1000 quantities. So this is your one step plant to plant stock transfer. Now we will see two step. Again same, you need to select remove from storage. Here you need to select movement type 303, material plant storage location quantities.
अगेन आई एम मूविंग फ्रॉम SL01 1000 क्वांटिटीज ऑफ AGP2, तो यहाँ से मैं 1000 क्वांटिटीज निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 3000 है, तो आफ्टर आवर मूवमेंट्स आर कंप्लीट इट शुड बी 2000। डेस्टिनेशन का मैं यहाँ पे सिर्फ प्लांट डाल सकता हूँ, अभी मैं यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन नहीं एंटर कर सकता हूँ। द रीजन इज when the quantities are received in destination plant, you can decide in which storage location you want to receive it. तो मैंने यहाँ पे चेक किया, check it and you can post it, display it. Now accounting takes place at 303, तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट दिखेगा, क्योंकि सोर्स प्लांट से क्वांटिटी माइनस हो रहा है, तो वहीं पे हमको उसका वैल्यू का चेंज जो है सोर्स प्लांट में अपडेट करना पड़ेगा। सो सोर्स प्लांट में वैल्यू माइनस हुआ, डेस्टिनेशन प्लांट में वैल्यू प्लस हुआ, तो वैल्यू ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे अपडेट हो चुका है, तो जब हम 305 करेंगे तो वहां पे वापस वैल्यू का अपडेट नहीं होगा, तो वहां पे सिर्फ ओनली मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। नाउ इफ यू रिफ्रेश द स्टॉक, यहाँ से 1000 क्वांटिटी माइनस हो गया और 1000 क्वांटिटी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, स्टॉक ट्रांसफर प्लांट, और वो कहाँ पे दिख रहा है, AGP1 के सामने दिख रहा है, इसका मतलब वो AGP1 में रिसीव होगा। ठीक है, नाउ व्हेन यू डू द प्लेस इन स्टोरेज, अगेन मटेरियल डॉक्यूमेंट का रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा। आइटम ओके, 1000 क्वांटिटीज वेयर मूवमेंट टाइप इज 305, डेस्टिनेशन स्टोरेज लोकेशन यू कैन सिलेक्ट नाउ, तो मैंने यहाँ पे 2000 सिलेक्ट किया, एंटर, चेक एंड पोस्ट। यहाँ पे सिर्फ मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटिंग ऑलरेडी 303 पे पोस्ट हुआ है। एंड इफ यू चेक, रिफ्रेश इट, now the stock quantities are available in destination storage location. So this is how plant to plant stock transfer takes place, one place and two step and one step. Now third is company code to company code. Company code to company code stock transfer syllabus में नहीं है, okay? For this we need to have configuration from sales side as well as materials management side. ठीक है, तो company code to company code stock transfer can be done. It is also called as intercompany stock transfer. Okay. जैसे अब तक हमने देखा डायरेक्ट स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन या प्लांट टू प्लांट स्टॉक ट्रांसफर जैसे हमने किया विद दिस मूवमेंट टाइप्स in inventory management, that is not possible for company code to company code stock transfer. ठीक है, for company code to company code stock transfer we need to configure intercompany stock transfer with the help of purchase order that are called as STOs. Okay, so for intercompany stock transfer and for intra-company also, means plant to plant stock transfer, this which we just saw, this is called as plant to plant stock transfer using inventory management. तो हमने सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ट्रांजेक्शंस यूज करके ये किया। नाउ द सेम स्टॉक ट्रांसफर कैन बी डन यूजिंग stock transport orders. What are stock transport orders? Stock transport orders are nothing but stock transfer purchase orders. So we can do stock transfer from one plant to other plant
using purchase orders as well instead of using inventory management. तो कंपनी कोड टू कंपनी कोड स्टॉक ट्रांसफर के लिए हमको एसटीओ का यूज करना पड़ता है. दैट एसटीओ इज कॉल्ड एज इंटर कंपनी एसटीओ. ठीक है. एंड सेम, if we want to do a stock transfer from one plant to other plant of same company code, then there also we can use a STO, and that STO is called as intra company STO. Okay. And without using, so this STOs, intercompany and intra-company STOs, for this STOs to configure, we need to have sales and distribution configuration in place. तो उसमें मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज दिस यूजेस द डिलीवरी रूट. तो इसको एसटीओ विथ डिलीवरी भी बोला जाता है. ठीक है. तो इसमें परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करके ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं. तो इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व होता है. आई विल कवर दिस लेटर. नाउ देयर इज वन मोर एसटीओ, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर विदाउट डिलीवरी, दैट इज ओनली यूजिंग मटेरियल मैनेजमेंट. इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं होता है. एसटीओ विदाउट डिलीवरी, तो इसमें डिलीवरी नहीं होता है. एक, सो दिस वी विल कवर नाउ, एसटीओ विदाउट डिलीवरी. सो अगेन दिस इज अ stock transfer from one plant to other plant, but with the help of a purchase order. So we have two plants, AGP2 and AGP1. Now suppose P1 is in need of material, so this becomes your receiving plant. AGP2 is the sending plant, it is supplying the material to AGP1 plant. So this is your sending plant, or this is your supplying plant. Okay. Now the plant which is in need will create a PO. So receiving plant creates a purchase order. That PO is given to sending plant. Sending plant, once receives this PO, does a goods issue against the purchase order. Goods issue against purchase. The movement type used is 351. ठीक है. एंड यहाँ से 351 पोस्ट करके मटेरियल को फिजिकली यहाँ पे भेजा जाएगा. When the material arrives at destination plant, in destination plant, a goods receipt is posted with reference to purchase order. PO के रेफरेंस में उसका गुड्स रिसिप्ट पोस्ट होता है, मूवमेंट टाइप 101. तो यहाँ पे जैसे ही आपने 351 पोस्ट किया, यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर जनरेटेड. दिस इज लाइक 303. 351 जैसे ही आपने पोस्ट किया, तो यहाँ पे सोर्स प्लांट से स्टॉक क्वांटिटीज माइनस होगा, तो उसका वैल्यू भी वहां पे माइनस होगा और डेस्टिनेशन में प्लस होगा. सो मटेरियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बोथ आर जनरेटेड एट 351 मूवमेंट टाइप. वंस द मटेरियल इज रिसीव्ड इन द destination plant, 101 is posted, and at this 101 only material document is generated. No accounting document is generated. Only material document is generated. यहाँ पे मटेरियल एंड अकाउंटिंग बोथ आर जनरेटेड. नाउ लेट अस टेस्ट दिस.
Go to ME21N. So we need to create a purchase order which is STOPO. Now to create a STOPO, the document type of PO will be UB, stock transfer, and the item category that is used in this PO will also be U, stock transfer. So these are two important points. So here we need to select UB STO. Now once you select UB STO, system asks you supplying plant instead of a vendor. जैसे हम डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करते हैं, सिस्टम को पता चलता है कि ये बिटवीन द प्लांट्स है, तो यहाँ पे वेंडर नहीं होगा। तो सप्लाइंग प्लांट क्या है हमारा? एजीपी, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन AG00, परचेसिंग ग्रुप, कंपनी कोड, मटेरियल, how much quantity you want to transfer. So let me enter 500 quantities. तो AGP2 से 500 क्वांटिटीज मुझे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ से जो 500 क्वांटिटीज है SL02 से मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो प्लांट, नाउ दिस प्लांट इज योर रिसीविंग प्लांट AGP1। यहाँ पे जो स्टोरेज लोकेशन डालना है वो रिसीविंग प्लांट का स्टोरेज लोकेशन होगा, तो मैं यहाँ पे 3000 डालता हूँ। 3000 में ऑलरेडी हमने रिसीव किया है क्या? नहीं रिसीव किया है। तो AGP1 के 3000 में 500 क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ, कहाँ से? SL02 से, AGP2 के SL02 से। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3000 में 500 आ जाएगा। एंटर, सिलेक्ट आइटम कैटेगरी एज U, स्टॉक ट्रांसफर, एंटर, check and save the PO. So STO, normal STO using only materials management is created like this. So document type of the purchase order should be UB STO, item category U होना चाहिए, मटेरियल दोनों प्लांट में एक्सटेंडेड होना चाहिए। ठीक है। नाउ वंस द PO is created, it is given to destination plant, source plant, that is AGP2. AGP2 is your supplying plant, तो इस प्लांट में इस PO के अगेंस्ट क्या होगा फिर? गुड्स इशू। सो यू गो टू मीगो, here you select goods issue and the reference document will be purchase order. Enter the PO number and you see the movement type is 351. Enter. So from PO the quantities are copied. Select item, okay, where you want to receive the receiving plant. Sorry, we are doing the goods receipt in plant. Sorry, we are doing a goods issue from sending plant. So 351, and you can see the stock sign as minus here. Minus means goods issue. So from AGP2 plant we are doing a goods issue. How? From which storage location? SL02। SL02 में 500 क्वांटिटी है जो हमको ट्रांसफर करना है, तो AGP2 के SL02 से 500 क्वांटिटी इशू करने जा रहे हैं। तो AGP2 SL02 500 quantities we are going to receive, quantities are here and this is a goods issue, तो यहाँ से क्वांटिटी माइनस होगा। चेक इट, पोस्ट इट, डिस्प्ले, मटेरियल डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड, go to document info, FI documents, accounting document is also generated। ठीक है, तो स्टॉक का वैल्यू माइनस हुआ और डेस्टिनेशन प्लांट में वैल्यू पोस्ट हो गया, प्लस हो गया। नाउ यू गो टू रिफ्रेश द स्टॉक, तो यहाँ से 500 क्वांटिटी माइनस होगा बट वो डेस्टिनेशन में अभी हमको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से 500 चला गया SL02 से एंड 3000 के सामने अभी यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड में 0 क्वांटिटी है, बट यू कैन सी 500 क्वांटिटीज इन, ऑन ऑर्डर स्टॉक। तो ऑर्डर किया हुआ है, 500 क्वांटिटी, 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 500 क्वांटिटी
कहाँ पे ऑर्डर किया हुआ है प्लांट, AGP2 पे ऑर्डर किया, उस PO के अगेंस्ट में 500 क्वांटिटी आने वाला है. नाउ वंस द मटेरियल arrives at the destination plant, that is your AGP1, you do a goods receipt against the purchase order. Movement type 101. ठीक है. आइटम ओके. कितना क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी है इसमें. ठीक है. वेयर यू आर रिसीविंग AGP1 स्टोरेज लोकेशन 3000. तो यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन हमने PO में डाला था, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉपी हो गया. चेक इस मटेरियल को, शेल्फ लाइफ मैनेज्ड है इसलिए वो हमको एरर दे रहा है. तो यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी हमने डाला, चेक किया, पोस्टेड एंड द गुड्स रिसिप्ट इज पोस्टेड. यहाँ पे सिर्फ मटेरियल डॉक्यूमेंट होगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी डेस्टिनेशन अपडेट हो चुका है एट द टाइम ऑफ 351 मूवमेंट टाइप. रिफ्रेश and now you can see 500 quantities are available in destination plant. So this is how you use the STO, normal STO. Clear? Any doubts, any questions in stock transfer? No, sir. Good. तो इसको प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो कल पूछ लेना. Okay. Okay? चलो, बाय बाय, टेक केयर. But